When Delhi's full-fledged budget was to be tabled in the Delhi Assembly, the economic survey was in fact read out yesterday. So there was no reason for the Delhi government, Aam Aadmi Party-led government, to not table the budget today. But what happened in the evening is that we got to know that MHA has not given clearance to this budget. Arvind Kejriwal himself also announced that as to how this political vendetta going on, and for the first time in history, in history of independent India, budget of any state has been stopped in this manner. And now Arvind Kejriwal has also sought a letter to Prime Minister Narendra Modi saying that as to why Prime Minister is so angry with Stay on with me, Amit, because already the Bharatiya Janata Party is reacting to this letter that's written by the Delhi Chief Minister. I'm joined by BJP's Harish Khurana, prominent leader for Delhi politics. Harish, so he's now written a letter saying, why are you so angry with the people of Delhi that you wouldn't let us prepare budget? What is the BJP reaction to it? Party government, especially Arvind Kejriwal, is in a habit of diversifying the issue, especially on the corruption issue. Now, the people of Delhi and country is asking few questions about liquor scam. He wants to diversify the issue and create a new politics on this regarding what has happened on the budget. You deliberately not answering whatever the clarification was required by the Home Ministry, which was sent on 17th. Till 20th night, 9:30 p.m., he kept his file under him. 9:30 he sent the file. 10 o'clock in the night yesterday, Lieutenant Governor again signed the document and sent it back so that delay should not be there. Point is, why deliberately you have kept the file with you from 17th till 20th, and why were you not speaking or not? Harish, is there not a deliberate delay from the Ministry of Home Affairs, from the central government? Because Kejriwal says we were not given suggestions in time. The Chief Secretary also delayed it. Then MHA is asking for clarification on advertisements and trying to raise questions that are not valid. That's what Aam Aadmi Party is saying. Pooja, just think one. On 17th, the Home Ministry sent the file regarding some clarification. Why you were keeping silent on this till 20th night? I mean, your house is on. Why were you not answering the question what has been asked by Home Ministry? Why were you not disclosing the fact that some clarification has been required by the Home Ministry? Why in the house also? Point is, the question was deliberately been ducked, and the basic crux of the story is they want to diversify the issue and create a new controversy regarding what the question was being asking by the people of Delhi about the corruption on the Kejriwal, on Sanjay Singh, on Manish Sisodia, and on Sabindra Jain. So these are people who have been involved in liquor scam. The people are asking the question just to diversify the issue. He's getting a new controversy again now. All right, Harish Khurana with the latest coming in and saying that there's not any delay from the government at the centre, but the delay is primarily from Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party in the government itself. Thank you so much, Harish Khurana, for the latest on that. Amit Bharadwaj continues to be with us. What we are looking at, remember, is a direct showdown now, because Arvind Kejriwal has written to Prime Minister Narendra Modi and has said, why are you so angry with the people of Delhi that you won't even let us present our budget? And in 75 years, now this is the first time that Delhi budget has not been allowed to be presented. So here's what happened. Aam Aadmi Party, or the Delhi government, was expected to present the Delhi budget today. But there was a back and forth that took place, and that has been happening with regard to files of the Delhi government and the Ministry of Home Affairs with regard to specifically financial issues. Now here's what happened. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal accused centre of deliberately halting some of the parts. Sources in Ministry of Home Affairs, however, have rubbished Kejriwal's charges, saying it only sought clarification on expenditure on advertisements, asserting that the infrastructure expenditure was way more. Now, Aam Aadmi Party was quick to respond, releasing some figures and data. Delhi government accused government of centre to spreading misinformation. They are claiming, the Delhi government, that the budget for infrastructure was 22,000 crore rupees. For advertisement was just 500 crore rupees. They're now accusing the Chief Secretary of passing suggestions late to the Delhi government. This back and forth has led to a delay in presenting the budget as well. This is quite shocking, and we have never heard this in last so many years, that the government's budget, the elected government's budget, has not been approved by the central government, although it's just a formality.
just a day or 2-3 days before presenting the budget, it has to be approved by the centre before it is presented in the Delhi's assembly. But this time, the central government is behaving like a dictatorship. So here's what's happening to help you understand between the Aam Aadmi Party in Delhi and BJP at the centre. It's just one more escalation that's been going on. It's a non-stop fight while the taxpayer of Delhi is suffering. I'm just cutting across meanwhile to BJP Shambit Patra speaking. Remember, constant attacks by BJP on Rahul Gandhi. आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद के माध्यम से चुनी गई हो, यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि सड़क में भी और सदन में भी इस विषय को उठाए। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल के केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है, बिल्कुल वही किया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यह विषय कितना गंभीर है। लंदन में जाना और लंदन में कहना, विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। यह डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, the so-called protectors of democracy, Europe and United States of America, why are they oblivious? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation. ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। What is the difference between a मनीशंकर अय्यर and राहुल गांधी? ये मनीशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलके काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था
और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमि में बैठ करके भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डीप स्टेट करार दे सकते हैं कि दीज आर द डीप स्टेट्स जस्ट एज पाकिस्तान हैज आईएसआई। ठीक उसी प्रकार इंडिया में डीप स्टेट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहा है। राहुल गांधी जो प्रेजेंट डे मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठकर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जिसका रोल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जुडिशियरी हो, ये आज कॉन्स्ट्रेन्ड है, ये आज उन्मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है। कमिटेड जुडिशियरी क्या होती थी ये आप इंदिरा जी के जीवनी में पढ़िए। किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान जुडिशियरी के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। व्हाट इज कमिटेड जुडिशियरी, इसकी पूरी चैप्टर आज अवेलेबल है। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। जस्ट बिकॉज द शहजादा वॉन्ट्स टू बिकम नवाब, शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं चलेगा शहजादा, ये नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपने कहा कि हमारी माइक्स ऑफ कर दी जाती है, डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट। राहुल जी आंकड़े लेके आए हैं आज आप पार्लियामेंट आए, आपके आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी आज बता रही है, इन आंकड़ों पे गौर फरमाएं। अटेंडेंस शीट को देखें। राहुल जी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में 52% है, जबकि नेशनल एवरेज 79% है। और स्टेट जहां से राहुल गांधी एमपी हैं अर्थात केरल का औसत 84% है। केरल के एमपी जो हैं वो 84% पार्लियामेंट आते हैं। नेशनल एवरेज लगभग 80% है और मात्र 52% टाइम्स राहुल गांधी पार्लियामेंट आते हैं। अधिकांश समय तो विदेश में ही रहते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे माइक ऑफ कर देते हैं। आपका अटेंडेंस ऑफ है साहब, माइक तो ऑन है। दूसरा आंकड़ा पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। Democracy, debates and discussion, they are the pillars of Indian Constitution. अगर डेमोक्रेसी में डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। डेमोक्रेसी की आत्मा डिबेट होती है। और राहुल गांधी ने मात्र 6 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है अब तक इस सेशन में मतलब 2019 से। नेशनल एवरेज 41 का है और स्टेट एवरेज 68.2। केरल से जहां से वो एमपी है वायनाड, उस स्टेट का एवरेज 68.2% है। कितने सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं? सवाल तो आप विदेश की भूमि में पूछते हैं, पार्लियामेंट में कितने सवाल पूछे हैं? राहुल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 सवाल पूछे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 163 की है और स्टेट एवरेज केरल का एवरेज
216 216 की है। आप सवाल पूछते नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव क्वेश्चंस। एक ही टेप रिकॉर्डर है आपके पास, वही हर जगह चलाते हैं। आप डिबेट में, डिस्कशन में भाग लेते नहीं है बिकॉज यू हैव नथिंग टू डिबेट। यू डोंट पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। आपकी अटेंडेंस यहां सबसे कम है बिकॉज यू फील दैट अनफॉर्चुनेटली, कोट अनकोट, अनफॉर्चुनेटली यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो तो एक बगल में जयराम रमेश बैठे रहते हैं जो कान में बोलते रहते हैं, वरना उनके मुख से तो सत्य निकल ही गया था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्चुनेटली आई लव ट्रैवलिंग। फॉर्चुनेटली वो एक फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट के रूप में देखे जाते हैं। उनको अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा फॉर्च्यून क्या है, तो सबसे बड़ा फॉर्च्यून वो कहेंगे हिंदुस्तान के विरोध में विदेश में बोलना, ये सबसे बड़ा फॉर्च्यून है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो स्वाभाविक रूप से ये आंकड़े राहुल गांधी जी के हैं और विदेश की भूमि में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले शहजादे राहुल गांधी जी से वी डोंट रिक्वेस्ट, नॉट एज बीजेपी, बट हिंदुस्तान के एक साधारण जनता के रूप में ये आदेश देते हैं, ये डिमांड करते हैं कि यू हैव टू अपोलोजाइज। आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को अपमानित किया है, हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है और ये अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनता ने नहीं दिया है। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। कांग्रेस पार्टी पहले तो ये कह रही है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगी। कल वो कर्नाटक और वायनाड के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं सच के लिए डर रहा हूं, माफी नहीं मांगी। ये स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। हिंदुस्तान के विरोध में विदेश की भूमि में बोलना, जो व्यक्ति जाके हिंदुस्तान के विरोध में पहले कश्मीर के खिलाफ बोल चुका हो विदेश की भूमि में और देश की भूमि में, और याद करिए राहुल गांधी जी के कश्मीर के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में डोसियर के रूप में इस्तेमाल किया था। किस प्रकार से राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने अपने पहले सेंटेंस में कोट किया था और यूएन में डोसियर दिया था कि देखिए जो पाकिस्तान बोल रही है सच बोल रही है भारत के लिए, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं। Delhi attacks by BJP netas on Rahul Gandhi and his remarks still demanding an apology. It's a wrap up from me for now. Thank you so much for watching, but stay tuned to India Today. Have a great day. Thank you for watching. Domestic abuse. The thought of it sends shiver down the spine. Think of the plight of women who go through this stigma and the social complexities involved, making just so many people brush this domestic violence under the carpet. But it has an impact. A far-reaching one on how the victim and the impact on her daily life. How she looks at relationships and how it plays out vis-a-vis her physical and mental health. Adults who have been the victims of domestic violence are much more prone than general population to experience mental health disorders regardless of their nature. Women with their mental health diagnosis were also found to have been more likely to have suffered from domestic violence than women with no mental health diagnosis. Such diagnoses were eating disorder, obsessive compulsive disorder, schizophrenia, bipolar disorder and other mental health issues like depression, anxiety and PTSD. The actual rate of domestic violence and sexual assault is unknown because many experiencing it are afraid to even disclose or report it. Abuse does not need to have a multiple occurrence or be carried out over years to be considered domestic violence. Even one episode can have serious impact and should not be overlooked. Domestic violence includes any of the following: physical violence, hitting, kicking, slapping or other types of physical force intended to hurt the partner; sexual violence,
forced or attempted forcing of a partner to engage in sexual actions when the partner does not consent or is not capable of consent. Psychological aggression, verbal and non-verbal communication to erode a person's self-worth, harm the partner mentally or emotionally, or exert control or power over the partner. Stalking, repeated unwanted attention and or contact that triggers fear or worry about the partner's safety or the safety of others that are close to the victim. Stalking means the communication is not consensual and may include verbal, written, or implied threat. Controlling behavior are harmful to relationship and may point to more severe domestic abuse. Controlling behaviors are actions, whether verbal or physical, that limit a partner's mobility or access to friend, family, environment outside of their home. The victim may also be deprived of food, money, or access to healthcare. Moreover, there may be forced reproduction. This includes actions in a partnership that may involve or not involve physical or sexual violence. The most frequently taken for granted, ignored, last on the priority list. We are talking about the health of women that gets the least amount of attention and actually deserves the maximum. And that is the reason this Women's Day we decided to do a bit of a rethink on what women should and must do for improving their health and their lifestyle. These are the things we must all follow. Fitness and food. This is a much needed power combination for women's health and longevity. The idea of fitness for many women is just losing weight. Healthy eating and diet and exercise are equally important in controlling weight as well as overall health management. No to toxins. Alcohol, smoking, excessive sugar, junk, mindless eating. These ensure that toxins stay on in the body. These toxins have a proven history of negative impact on ovarian health. Wellness, a comprehensive view of your health. Healthy body, mind and soul are important. The time is truly now to shift focus from only physical activity to mental health and wellness program like yoga and meditation as a full package to good health. Preventive care. Early diagnosis and vaccinations are important. For ailment like breast cancer, for example, preventive health becomes extremely important. Women must watch out for any sign and warnings such as irregular periods, lump in the breast or any unusual discharge. HPV, human papilloma virus, one of the causative factor for a cervical cancer. So this is one cancer where a vaccine is available. So should be given to I would say young girls starting from the age of 9. That is the only way to remain fit and healthy. For the same, acknowledge that your body is important. Low hemoglobin will feel fatigued, lethargic, then like vitamin B12, vitamin D, if they are less, then it gives a lot of aches and pains in legs. A lot of ladies complain about backache and they are not feeling up to the mark to do some kind of work or these things. So according to the requirement, thyroid, one of the things, if there is the thyroid is on a higher side, the patient may bleed more. There is a little weight gain with hypothyroid. So if there are any symptoms, they are specifically feeling low, lethargic, then they should go for this testing.
Bank of India. Good people to bank with. The all-new Red Dark Edition by Tata Motors. Hi there, very good morning. You're watching India's Agenda. I'm Sneha Mordani. Let's tell you what are the top stories this morning first. Time running out for Khalistani thug as hunt for Amritpal intensifies. Over 65 hours of hiding, fugitive Amritpal refuses to face law. Guns, bullets seized. ISI link has been uncovered. K-Army heckles journalists covering Khalistani rampage in the UK. Cops remain mere spectators, but remove journalists from the location. Back from UK, Rahul Gandhi attacks Modi yet again. Vows to fight attack on democracy, alleges every institution has been compromised. Fresh flashpoint between Kejriwal and Centre. Centre questions up expenditure on ads. Arvind Kejriwal taunts, says let the Prime Minister present the budget. Xi and Putin's big message to the West. Putin accepts China's Ukraine peace plan. West alienates China, moves closer to Russia. Some breaking news just coming in this morning. BJP alleges conspiracy by Gandhis. BJP compares Rahul to traitor Mir Jafar. BJP says Rahul lobbying abroad to become Nawab. Rahul's parliament attendance is a missile. BJP's mic on, but attendance of jibe against Rahul Gandhi. Not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है. शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा. The present day Mir Jafar of Indian polity, Rahul Gandhi, has to apologize. Mir Jafar को माफी मांगनी ही पड़ेगी. Okay, so that's the BJP's big attack against Rahul Gandhi, comparing him to traitor Mir Jafar and saying that this is the reason why he is making these statements. Also talking about the fact that he's hardly in parliament. His attendance is a missile, is what the BJP has said. Just because the Sahjada wants to become Nawab, Sahjade को नवाब बनना है. कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है. कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है. इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो. Rahul's parliament attendance is very poor, is what the BJP said in a renewed attack at Rahul Gandhi. Attendance of mic on is what the BJP says. This after the war of words essentially continues between the BJP and the Congress. Talking about a conspiracy by Rahul Gandhi. He says that Sambit Patra in fact has said that Rahul Gandhi is like traitor Mir Jafar and he's lobbying abroad to become a Nawab. That's the BJP's renewed fresh attack on Congress MP from Wayanad, Rahul Gandhi. This comes at a time when Rahul Gandhi, in fact, outside of India, was critical of the functioning of the Bharatiya Janata Party and the government led by the BJP.
The BJP says this is criticism of India's democratic values, India's democratic system. Right now, the BJP says, or rather comparing Rahul Gandhi to traitor Mir Jafar, Rahul lobbying abroad to become Nawab. Rahul's parliament attendance is a missile. BJP's mic on, attendance of jibe at Rahul Gandhi. Mic on, attendance of jibe at Rahul Gandhi, questioning his attendance in Parliament, saying that he is in fact hardly there in Parliament. Also saying that there is a conspiracy that is being spun by Rahul Gandhi to become the Nawab, and that's the reason why he lobbies outside of India. Rahul Gandhi renews institutions under attack charge while addressing a rally in Wayanad. Gandhi reiterated that it is his duty to fight assault on democracy. His remarks come at a time when he is already under fire from the BJP over his remarks in London, with the party constantly seeking an apology from the Congress leader. Here's more. एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाके एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करे, शायद मोटिवेटेड है, ये भी एक शंका आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी कहती है कि हम सब ने इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी। Under fire from the BJP, Congress MP Rahul Gandhi has renewed democracy attack, this time from Kerala's Wayanad. They cannot do it to me. And it is my duty and all our duties to fight this assault on democracy, to fight the assault on India's voice. Rahul declared he will not stop his criticism of the Narendra Modi government. The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. He is one individual citizen of this country. And it is my duty and all our duties to fight this assault on democracy. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. On Sunday, during a parliamentary panel meet, Rahul had clarified the remarks he made in London. He also said that he did not seek any country's intervention, nor did he speak against India. But the BJP has been adamant on his apology ever since he's come back from the UK. I don't know what it is about Mr. Gandhi's understanding. It's not just a flawed understanding. Is he playing to an agenda? But he should come clean. And to begin with, I think you need closure, and the closure will only come if he apologizes. And he should apologize categorically. इन्होंने भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से ओछी बयानबाजी किया, क्या ये शोभा देता है क्या? ऐसे लोगों को निश्चित रूप में देशद्रोह के पंक्ति में जाना जाएगा। The Congress, on the other hand, is insisting on a JPC probe against Adani Group. पहली बार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग पर ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज आकर अड़ंगा डालते हैं और हाउस को एडजर्न करते हैं। और जेपीसी, अगर आपके यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा है तो आप जेपीसी की मांग को क्यों ठुकरा रहे हैं, क्यों बचाव में लगे हैं? All that we asked is either you inquire it to JPC or through the Supreme Court also we asked at that time. There is any doubt of scandal or a scam, let us inquire by a very credible agency. One is JPC. Question Sankhya 261. Caught in the crossfire, Parliament is not functioning for more than a week. The House seems headed for another washout. Bureau Report, India Today. सदन आपका है, सदन चलेगा, देश सदन।
Well, the ongoing deadlock in Parliament continues. As the Parliament remains stalled for 6th consecutive day on Monday, the opposition has blamed the centre for the ruckus in Parliament. Today, BJP fired traitor Mir Jafar Jaib at Rahul Gandhi and called him Shahzada, who was foreign lobbying to become Nawab. Opposition parties have decided to hold a meeting today as well to chalk out their strategy for the remaining days of the session. Meanwhile, the slugfest between the BJP and the opposition continues. While the BJP press on its demand for Rahul Gandhi's apology over the criticism of Indian democracy in the UK, the opposition has vowed not to be backed down by or remove its demand for the JPC in connection with the Hindenburg report on the Adani Group. My colleague Pooja Shali had a conversation with External Affairs Minister S. Jaishankar. Listen in. On a lighter note, how do you react to the sudden attention that your quotes get? There are memes being made of it. People are quoting it on different stages. To be very honest, it's embarrassing. It's embarrassing. Sometimes I look at it and say, that's not really me. In a sense, people then almost want to provoke you to say, say something which you want then to fall back into a more defensive mode. But look, the reality is, this era, yes. The social media era, the high voltage media era, it calls for a different technique. It doesn't, there is a time for measured, sober, almost boring statements. There are times for sharp pushbacks. And I don't think one should be habituated so deeply in one that when the moment comes to make your point, you miss it. News coming in this morning. Let's go straight to that. The BJP has attacked Rahul Gandhi and this rages on. Bommai's big leader Jaibet Gandhi speaks ill about India on foreign soil is what Bommai says. Tejasvi also criticizes Congress's scheme for the youth. Tejasvi says Rahul's big vision to destroy the youth. Okay, so we have the attack on Rahul Gandhi that is now coming in from Bommai, the Chief Minister of Karnataka. It's big leader Jaibet Rahul Gandhi. Massive manhunt on to nab fugitive Waris Punjab, the Chief Amritpal Singh. 114 of his Amritpal's aides have been arrested so far, including his driver and his uncle, who surrendered before the Punjab police. Security has been beefed up. Internet has been suspended in some parts of Punjab to prevent mobilization and violence. Earlier in the crackdown on Amritpal, his swanky Mercedes SUV swords, 1,315 bore rifle, 57 live cartridges, a walkie-talkie and bulletproof jackets has been seized from Jalandhar by cops. Remember, the self-styled radical preacher Amritpal has been on the run since the Punjab police launched a massive crackdown on Saturday. The Punjab police is also probing involvement of Pakistan spy agency ISIL, foreign funding. Once nabbed, he is indeed going to be booked under the stringent provisions of the NSA. देखिए, हम कांगड़ा पुलिस इस बात को लेकर पूरी सजग है और अलर्ट है। बार बार हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे सभी थाने चौकियों को निर्देश यहाँ से दिए गए हैं कि किसी भी इस तरह से सूचना आती है तो तुरंत हमारे साथ साझा करें और हम किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर एरियाज़ पे चेकिंग भी चल रही है, साथ में भी तो हमारा जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर है वहाँ भी चल रही है और हमारा जो संसारपुर टेरेस है उधर भी चेकिंग करेंगे। जो बाहर से आने वाले पर्यटक है या और है